good afternoon, class 11th. Hope you all will be doing good in your home. So students, in the last class we have completed up to leaf and its characteristics phyllotaxy. Okay, three type of phyllotaxy we have seen in the leaf: alternate, opposite and bold. Okay, now in today's class we are going to start the modification of leaf. Students, hope you will all understand the part 1 of the same chapter and completed your work. Okay, to write the notes of the same chapter. Let's start the modification of leaves. Leaves are modified to perform functions other than photosynthesis. In many plants, leaves are modified to perform different functions rather than photosynthesis. As we all know that leaves perform the function of photosynthesis as leaves called the kitchen of the plant. Okay, like example tendrils for climbing, example peas. In this leaves were modified. Spines for defense purpose in cactus. Fleshy leaves to store food, example onion and garlic. Okay, so here leaves were modified into different parts of the plants to perform different functions. In some plants such as Australian Ica, the leaves are small and short-leaved. Their petioles expand, become green and synthesis of food. Okay, some plants are there like Australian Ica. The leaves are so small and they are short-lived. They expand their petioles and becomes green and synthesis of food. Leaves of some insectivorous plants like peach plant and Venus flytrap are also modified their leaves to catch their prey. Okay, as you see in the peach plant and the Venus flytrap. Okay, so here are the modification of leaves which we have completed. Now we are going to start the flower and the inflorescence. Okay, the main topic of the chapter is the flower and the inflorescence. Let's start the topic. The flower and the inflorescence. Let's start. A flower is a beautiful part of the plant. So let's discuss about it. A flower is modified shoot wherein the shoot apical meristematum changes to floral meristematum. As we all know that the shoot apical meristematum on the top, it will changes into the floral meristematum. Okay. Internodes do not elongate and the axis gets condensed. Their internodes do not elongate and their axis were condensed. बहुत मोटे हो जाते हैं वो. The apex produce various floral appendages, literally and successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transform into a flower, it is solitary. Okay, जो shoot tip होता है वो flower में transform हो जाता है, then it is solitary. Here you can see the flower, racemose, cymose. Okay, arrangement of cluster of flowers on the floral axis is called as inflorescence. ठीक है, जब floral axis पे cluster of flowers arrangement होता है, बहुत सारे flowers होते हैं, then this is called as inflorescence. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? inflorescence बोलते हैं. Based on the whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, inflorescences are two types. अब according to the growth of the flowers into cluster or into one or two flowers, it will continues. This inflorescence has been divided into two types, racemose and cymose. Racemose और cymose पिक्चर में ही देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि racemose में क्या दिखा रहे हैं? क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स. So many flowers were arises from the floral axis, and in cymose the only single will flower will arises in cymose. Okay, let's discuss this racemose and cymose. In this, the main axis continues to grow. Flowers born literally in the apical succession. ठीक है, apical succession में ये जो flowers होते हैं वो born होते हैं. As you can see in the acropetal. Okay, acropetal succession में देखो वो कैसे arise हो रहे हैं in very clusters. In this, the main axis terminates in a flower. Hence, it is limited in growth. और इसमें क्या होता है? Basipetal होता है और जो growth होता है वो limited होता है. The flowers are born in a basipetal order. Okay. Now let's start the flower. As you have seen the flower, it is the reproductive unit. As we all know that flower is called the reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. This flower is meant for the sexual reproduction of the plant. A flower has a stalk pedicle. It has swollen end is called thalamus. Okay. As we all know that they have a pedicle which is swollen, which is called as thalamus. Reduced leaf found at the base of the pedicle, it is called bracket. ठीक है, flowers with brackets are called bracteate and those without brackets are called ebracteate. ठीक है, अभी flowers में bracket present होता है
in the below the sepals. If the flower had the brackets, they are called bracteate, and those flower without brackets, they are called as ebracteate. ठीक है, ये क्लियरली इसको याद कर लेना. जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो ये ब्रैक्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखने टाइम पे. द फ्लावर विच हैज़ ब्रैकेट दे आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट, एंड द फ्लावर विच आर विथआउट ब्रैक्टेट इट इज़ कॉल्ड एज ebracteate. Okay, so a typical flower has 4 kind of whorls. Their whorls are of 4 kind arranged on the thalamus. Let's start this one. Calyx, corolla, accessory organs. As you see the calyx and the corolla. Petals, sepals are called the calyx and petals are called the corolla. Endoecium, gynoecium, reproductive organ. Male part is called as endoecium and the female part is called as gynoecium. It means stamen, anther and filament, they are called as endoecium, and style, stigma, ovary, carpel, it is called as gynoecium. Stamen is endoecium and carpel is gynoecium, male and female reproductive part. So, in some flowers like lily, the calyx and the corolla are not distinct. It is termed as perianth. ठीक है, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते. सो दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला इज कॉल्ड एज पेरेंथ. व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल. जब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल एंड फीमेल, दैन दिस फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल. एंड इफ द फ्लावर हैविंग आइदर एंडोशियम और गाइनोशियम सिंगल सेल्स है तो इट इज़ कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल. This is the common phenomena which you have learned in class 9, 10th and 11th also you have learned. ठीक है, so this is the common phenomena. Okay, so unisexual means either the flower have endoecium or gynoecium, single cell, a single sex organ, or bisexual means in the flower both sexes are present, male and female, endoecium and gynoecium. Now types of a flower. So according to their symmetry, the flower has been divided into 3 types. Actinomorphic, radial symmetry, मतलब जितने भी equal parts में cut करोगे वो cut होगा. Zygomorphic, bilateral symmetry, if a flower cut in 2 equal parts that is called as zygomorphic. And asymmetry, irregular, मतलब flower irregular shape का होगा और वो किसी भी equal part में cut नहीं होगा. Okay, actinomorphic, radial symmetry, zygomorphic, bilateral symmetry, and asymmetry, irregular symmetry. So first we will discuss about actinomorphic. Hence a flower can be divided into 2 equal radial half in any radial plane passing through the center. Okay, example mustard, dhatura, chili. As I explained you, just example देखो उसका mustard, dhatura and chili. Now zygomorphic, a flower can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane. Example pea, gulmohar, bean, cassia. ठीक है, these are the example of zygomorphic. And a flower cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center. Example canna indica, canna and canna. These here are the example of different types of flower. Now based on the number of floral appendages, flower are many types. अब उसका floral appendages के बेस पे देखोगे तो flower बहुत सारे types के होते हैं. ठीक है, उनकी पंखुड़ी को देखोगे, ट्राइमोरस, टेट्रामोरस एंड पेंटामोरस. जैसे कि वो 3 पेटल्स होंगे, उसके 4 होंगे फ्लोरल appendages, 5 होंगे तो ट्राइमोरस, टेट्रामोरस एंड पेंटामोरस. ओके, so based on the position of calyx, corolla and endoecium in respect of the ovary and thalamus, the flower are of 3 types. अब इनके calyx, corolla और endoecium, on the basis of these 3, this flower has been divided into again 3 type: hypogamous, perigamous and epigamous. ठीक है, hypogamous का flower का arrangement कैसे होता है देखो, वो जो ovary होता है वो पूरे petal sepal से cover होता है. ठीक, अब perigamous में क्या होता है, जो ओवरी होता है वो कैलिक्स से कवर होता है और जो पेटल्स होते हैं उसके सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो ऊपर होते हैं. सेम, और इसमें भी देखो एंडोशियम में जो सेपल्स होते हैं वो पूरा ओवरी को कवर करके रखता है और ओवरी पूरी कवर्ड रहती है और जो पेटल्स होते हैं वो ऊपर में होता है. सो हाइपोगेमस, पेरीगेमस एंड एपिगेमस.
First one, hypogamous. Here, gynoecium occupies the highest position while other parts are situated below it. As I told you, जो gynoecium होता है वो पूरा highest position लेता है और other parts जो होते हैं वो उसके नीचे होते हैं. It means ovaries are superior. And example, mustard, China rose and brinjal. ठीक है. Perigamous, gynoecium is situated in the center, female part, and the other part of the flower are located in the rim of the thalamus. ठीक है, thalamus के ring में formed होते हैं, almost the same level. Example, ovary is half inferior. इसमें क्या होता है, ovary थोड़ी सी inferior होती है. Example, pump, rose and page. Epigamous, the margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. ठीक है, पूरा उसको क्लोजली कवर करके ऊपर से उसके फ्यूजन से ही वो ग्रोथ हो रहा है उसका जो फ्लावर्स का पेटल्स है. अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर अराइजेस अबव द ओवरी इज इंफीरियर. हाइपोगैमस में ओवरी सुपीरियर थी. पेरीगैमस में ओवरी हाफ इंफीरियर है और एपीगैमस में फुल इंफीरियर है. एग्जाम्पल, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. ओके, if you imagine the diagram, flower of sunflower, you can see that the flowers are above the ovaries, so the ovaries are inferior. Now parts of a flower. Here we will start the parts of the flower. Calyx, corolla, endoecium, gynoecium. Endoecium means stamen, male reproductive part. Gynoecium means carpel, female reproductive part. Calyx, corolla, endoecium and gynoecium. As you have seen in the picture, you have to draw the diagram of the parts of a flower in your copy. Okay, this is your homework, students. Again and again I am saying you have to draw the diagram. Now parts of a flower. First one is the calyx. First we will discuss about the calyx. See where are the calyx were located in the flower. Hope you will all understand. And we have to also learn the arrangement of the calyx. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको. It is the outermost wall of a flower. As we all know that it is the outermost wall of the flower. It is made up of sepals. This calyx are made up of sepals. जो green part होते हैं ना उसी को sepals बोलते हैं. Generally, sepals are green, leafy-like and protect the flower in the bud stage. These sepals protect the flowers in the bud stage. The calyx may be gamosepals और पॉलीसेपल्स. गैमोसेपल्स मतलब यूनाइटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे. एज यू सी इन द पिक्चर, इन द वाइट फ्लावर एंड इन द रोज यू विल सी द कैलिक्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. पॉलीसेपल्स, सेपल्स वेयर फ्री. गैमोसेपल्स यूनाइटेड एंड पॉलीसेपल्स, सेपल्स वेयर फ्री. नाउ corolla. Corolla is called as the petals. It is the whole inner to calyx. वो calyx के अंदर होता है and it is composed of petals. पंखुड़ी, flower की पंखुड़ी को बोलते हैं. Petals are brightly colored. As we all know that the flowers are also all flowers are brightly colored. It helps to attract the insects for pollination. These flowers petals, due to their colorful region, the insects were attracted for the pollination process. Corolla may be gamopetals यूनाइटेड और दे वेयर पेटल्स फ्री. पॉली पेटल्स, ठीक है, वो यूनाइटेड भी रह सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं. ठीक है, गैमो पेटल्स एंड पॉली पेटल्स. शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स. सो इन डिफरेंट प्लांट्स देयर शेप वेयर वेरी फ्रॉम ईच अदर. कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड. उसका शेप भी अलग अलग हो सकता है. ठीक है. नाउ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. एस्टिवेशन. अब इसका एस्टिवेशन पढ़ेंगे कैसा होता है. इट इज़ द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड. अब ये दिस एस्टिवेशन इज कॉल्ड द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स. अब ये पेटल्स और सेपल्स कैसे अरेंज है, वो एक दूसरे के ऊपर है या अलग अलग है या किस टाइप का अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. सो अकॉर्डिंग टू द एस्टिवेशन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर देयर. वेलवेट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एज यू सीन. ट्विस्टेड मतलब वो ट्विस्टेड है, एक दूसरे के ऊपर है. इम्ब्रैक्टिएट मतलब वो एक दूसरे को ब्रैकेट के अंदर डाल के रखते हैं. और वेक्सिलरी एज यू सीन इन द पिक्चर. ठीक है. सो वेलवेट सेपल्स और पेटल्स इन अ वोल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग. ठीक है, वो एक दूसरे के मार्जिन को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं. इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपस, धतूरा. एंड ट्विस्टेड एग्जाम्पल इज
चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन. अब वन मार्जिन एट द अपेंडिजेस ओवरलैप्स एट द नेक्स्ट. इसमें एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड. एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. Imbracteate, they form a bracket. The margins of the sepals or petals overlap one another but not at any particular direction. कोई particular direction नहीं होता इसका, but they overlap to each other. Example cassia and gulmohar. ठीक है, this flower this shows this type of imbracteate estivation, petals or sepals both. Now last one is vexillary papilioneus. In this there are 5 petals. The largest standard overlaps the 2 lateral petals wings which in turn overlap to the smallest interior petal scale. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पेटल्स एक लार्ज पेटल होता है जो सारे स्मॉल पेटल्स को और सेपल्स को ओवरलैप करके रखता है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट यू हैव सीन इन द बीन एंड पी. ठीक है, जो बड़ा है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद छोटे छोटे जो उसके विंग्स होंगे वो उसके साथ अरेंज्ड होंगे. सो दिस इज द एस्टिवेशन ऑफ parts of flower. Now another endoecium. Fourth part of flower is endoecium, the male reproductive part. Let's start this one. As you see in the picture, the male reproductive part, ठीक है, pollen grains होते हैं, है ना, pollen grains होते हैं जो एंथर में होते हैं. Let's start this one. It is composed of stamen. The male reproductive part is called as stamen. Each stamen represents the male reproductive organ. A stamen consists of stalk, filament and anther. The stalk, filament and the anther. In the anther, these pollen grains were present. Each anther is usually bilobed. वो bilobed होता है. देखो anther का diagram देखोगे तो bilobed है. Two lobes were present in the each anther. Each lobe has 2 chambers called pollen sacs, and both the 2 chambers they have the pollen sacs in which the pollen sacs contain pollen grains. A sterile stamen is called stamenoid. Okay. When the stamens are attached to the petals, they are epipetalous. जब stamen जो petals से attach होता है, they are called as epipetalous. Example brinjal. When the stamens are attached to perianth, they are called as epipellus. जब उसके perianth से attach होता है, they are called as lily. They are called as epipylus, which is present in the lily. ठीक है, as you see in the picture, brinjal का flower देखो पूरा petals से पूरा attached है, सिर्फ petals से attached है. सो दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटल्स. और वो पूरा पेरिनेथ उसके नीचे पूरा बिलो कैलिक्स करोला तक पूरा अटैच रहता है, तो इट इज कॉल्ड एज एपीपाइलस विच इज प्रेजेंट इन द लिली. ठीक है, नाउ इफ द स्टेमन इन अ फ्लावर आर फ्री, इट इज कॉल्ड एज पॉलिएंड्रस. ठीक है, जब वो जो स्टेमन है वो फ्लावर से फ्री रहता है, विच इज कॉल्ड एज पॉलिएंड्रस. इफ द स्टेमन्स आर यूनाइटेड, इट इज कॉल्ड एज सिंड्रस. अब वो यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ है, so they are called as cindrus. China rose example. Now cindrus stamens are many types. अब जो cindrus stamens होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं. कैसे? They are attached to the cindrus, they are attached to the united together. Okay, so monodipilus, diphyllus and polydiphyllus. Stamens are united into one branch or one bundle. China rose. Stamens are united into 2 bundles. They are peas. And stamens are united in more than 2 bundles. They are present in citrus. ठीक है, एक बंडल में है. As you see in the monodiphyllus, एक बंडल में अरेंजमेंट है उसका, जो येलो कलर के फ्लावर्स है. So they are called as monodiphyllus. And 2 bundles में अरेंज है तो diphyllus, and और बहुत सारे more than 2 bundles में अरेंज है तो polydiphyllus. There may be variation in the length of filament within a flower. Example सेल्विया एंड मस्टर्ड. अब इसका लेंथ भी डिफर करता है, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ भी सेम हो, इट मे बी डिफर इन डिफरेंट फ्लावर्स. नाउ द थर्ड पार्ट इज गाइनोशियम. ओके, गाइनोशियम pistil is a female reproductive part of the flower and is made up of 1 or more carpel. ठीक है, this gynoecium pistil is called the female part of the flower and it is made up of 1 or more carpel. This carpel has been divided into 3 different parts: stigma, style and ovary. As you see in the picture, stigma, style and ovaries. Okay, in the ovary the ovules are present, which is called as megasporangia. Now stigma, it is usually at the tip of the style and it is the receptive surface of the pollen grain. ये जो स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव सरफेस होता है, यही रिसीव करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को. एंड स्टाइल,
An elongated tube that connects ovary to stigma. In the between the stigma, this elongated tube, thin tube is present which connects the stigma to the ovary. Then the ovary, it is the enlarged basal part on which the style lies. ठीक है, style इसमें present होता है. Each ovary bears one or more than ovules attached to a flat cushions like placenta. In between the placenta is present, and in this ovary ovules were attached. One or more ovules were attached, as you see in the picture. Okay. Now polycarpillary pistil. Parts of the flower. Let's discuss about parts of the flower. D. Gynoecium and polycarpally pistil. Pistil with many carpels. ठीक है, pistil जो होते हैं वो बहुत सारे carpels present होते हैं. So there are of two type. Apocarpus. Carpels are free. Example lotus and rose. इसमें क्या होगा? Their carpels were free to each other. And syncarpus, carpels are fused. ठीक है. Example mustard and tomato. As you see in the lotus, their carpels are free to each other. And in mustard they are attached to each other. ठीक है. Now it is the arrangement of ovules on the placenta within the ovary. See how the ovules were arranged in the placenta in the ovary. ठीक है, जब हम लोग बता रही हूँ बार बार, जब हम लोग इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे और फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि ओवरीज कैसे प्रेजेंट होती हैं. सो फर्स्ट वन इज द मार्जिनल, एक्सिल, पेरिएटल, फ्री सेंट्रल एंड बसाल. मार्जिनल देखो पी में ऐसा होता है, वन मार्जिन में वो जो उनके सीड्स प्रेजेंट होते हैं. एक्साइल मतलब इन बिटवीन द एक्सिस. पेरिटियल मतलब अलग अलग कोने में. और फ्री सेंट्रल सेंटर में है बट फ्री है एक दूसरे से. एंड बसाल. ठीक है. सो हियर इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी. ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, उसके डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे. So first one is the margin, as you see in the P. ठीक है. Here the placenta forms a ridge along the ventral structure of the ovary and the ovules are borne on the ridge forming two rows. As I explained you. B exile, tomato. ठीक है, tomato हो गया, chili हो गया. Here the placenta is exile and the ovules are attached to the मल्टीकोलर ओवरीज. ठीक है, देखो जैसे कि उसका अलग अलग चैम्बर बना हुआ है, मल्टीकोलर ओवरीज है, और वो अलग अलग जगह पे जो ओवरी जो सीड्स हैं, जो ओवरीज हैं, वो ओव्यूल्स हैं जो अटैच्ड है. ठीक है. एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. नाउ हियर द ओव्यूल्स, थर्ड वन इज द पेरिटल. हियर द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट. Ovaries has one chamber but it becomes two due to the formation of false septum. Due to the formation of false septum, these ovaries were attached. और वो क्या होता है, the seeds जो ovaries होते हैं अलग अलग chamber में form होते हैं, as you see in the picture. Example mustard and argemone. Free central. Here ovules are born on central axis and septa are absent. ठीक है. इसमें जो सेप्टा है प्लेसेंटा वो एब्सेंट होता है, वो सेंटर में फॉर्म होता है. धाइथिनस एंड पेरीमोस एग्जांपल है इसके. बेसाल. हियर प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओवल इज अटैच्ड टू इट. सिंगल ओवरी प्रेजेंट होता है. सनफ्लावर और मैरीगोल्ड इसका एग्जांपल है. ओके. होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक. gynoecium. So after fertilization the ovules develops into seed and the ovary matures into a fruit. As we all know that after fertilization the ovules developed into the seeds and the ovary mature into a fruit. अभी तक जो हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़े थे वही पढ़े थे. ठीक है, कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं और ओवरी होता है वो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है और दिस एंडोस्पर्म बिकम्स द फ्रूट. ओके. सो होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द today's topic, the flower. There are four parts: pistil, stamen, style, male and female reproductive part, endoecium, gynoecium, stamen and carpel. Okay, these all things were very important. So students, after the completion of video, try to read the chapter up to which the chapter were completed. In the next class we will start the fruit and the seed. Okay, so up to this please read the chapter once, otherwise you are not able to understand, and especially the venation and the arrangement of ovary. These two are very important. Hope you will all understand today's class. See you in the next class, students. Thank you so much.